Good evening and a very warm welcome to all our audience who are watching this session live. And yes, we know there's been quite some time since we brought you a live session like this. But again, thank you so much for joining us in big numbers and giving us all your warmth, all your love. And IDSA remains thankful to the support of all our direct sellers. आप लोग बड़ी संख्या में हमारे वेबिनार्स, हमारी पैनल डिस्कशंस को अटेंड करते हैं एक्टिवली। हमारे एक्सपर्ट्स जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आप उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दीज सेशंस इंटरेक्टिव। और अगेन आज मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, आप उसको हमारे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट to ensure that the selected questions are answered and by our experts. So starting with today's session, you have seen us in the past coming up with webinars on how direct selling has given us an opportunity to generate self income, how direct selling is contributing to women empowerment, how direct selling is making its impact on the socio-economic growth of the country, and all other topics related to direct selling. बट एक एस्पेक्ट या एक एरिया जो कि इन सब डिस्कशंस के बीच कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं ज्यादा हो पाया है, वो है किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री एंड एज पर सम एस्टिमेट्स इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2025 हमारे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इट विल रीच the value of US $1 trillion, which will be a significant number. डेटा दिखाते हैं कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन हमारे जीडीपी का तकरीबन 17 से 18% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। इतना बड़ा इंडिया जैसे देश में इतना बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद अगर हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य की बात करें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, so Indian manufacturing जो है, it represents only 2% of the entire world's manufacturing output. So clearly government ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखे हैं सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट का प्लान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो किया जाए ताकि हमारे जीडीपी का लगभग 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे, और इसके अलावा तकरीबन 10 करोड़ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे आने वाले सालों में। गवर्नमेंट के निरंतर इसी दिशा में प्रयास है। Now, direct selling in सब के बीच में कहाँ आती है? Direct selling is surely playing its part in the development of manufacturing sector in India. Increasing number of direct selling companies are setting up their own manufacturing facilities in India. इसके अलावा direct selling companies जो हैं, they are making substantial investment in what we known as contract manufacturing, जहाँ पर आप एक local domestic MSME manufacturer की skills और उसकी technical know-how को अपनी investment के जरिए आप upgrade करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एमएसएमई सेक्टर को भी ग्रो करने का एक अवसर देती है। However, all is not as simple as it sounds, and I'm sure इनके भी बहुत चैलेंजेस रहेंगे। एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग के परिप्रेक्ष्य में नजर आता है, वो है हाउ टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, दे आर नोन, दे आर wherever you go across the world, direct selling products are known for their world class quality. Now manufacturing is where it all begins. So किस तरह से इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट असेंबली लाइन से बाहर आ रहा है वो उन्हीं क्वालिटी के पैरामीटर्स पे खरा उतरता है जिसके बेसिस पे हमारे डायरेक्ट सेलर्स अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। So in order to discuss all such issues, we have invited people for the first time for you who are behind the limelight. They stay unknown or they stay behind the scenes to ensure that rest of us, people like us, come and publicize ourselves on big screens, on big platforms, on the basis of products which are actually manufactured by them. So without wasting any time, let me quickly start introducing our panelists for today's session. First, I'm going to introduce Dr. Raghuveer. वेलकम सर। धन्यवाद चेतन जी। जी, डॉक्टर रघुवीर इज डायरेक्टर इन ब्लू लाइफ मार्केटिंग। डॉक्टर रघुवीर, आप पीएचडी हैं इन फार्मेसी विद ओवर 29 इयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक ट्रांसफर एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपीरियंस। आपने सिप्ला, एबॉट, एपेक्स लैब्स, विवीमेड एंड सर्वोत्तम केयर जैसी टॉप कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे आपने काम किया है। ही हैज गॉट मेनी अवार्ड्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड स्टेट हेल्थ बोर्ड
and he is in fact one of the lead auditors for HYM international certifications जो ISO certifications provide करती हैं. आपके पास 2 patents हैं, worldwide patents हैं for products. Welcome, sir, and it would be great to have your insights on this important issue. Next, I'm going to introduce Sri Madhavan Pillai. Welcome, Madhavan ji. Welcome to the show. So just quickly introducing Madhavan ji. Madhavan ji works with Amway India. So Amway India, we all know, is as old as direct selling in India. So currently is the site in charge for Amway manufacturing plant in Dindigul, Tamil Nadu. By education, Madhavan ji is an electrical and electronics engineer from Anna University, after which आपने School of Management IIT Bombay से अपना MBA complete किया. He has over 13 years of experience. And he has worked with leading companies like Procter & Gamble and Manhattan Associates. And welcome, sir. Welcome to the show. Let me now quickly introduce Sri Rajiv Bansal. Rajiv Bansal ji, he is working with IMC. IMC जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है भारत में. राजीव बंसल जी IMC की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आप इसको हेड करते हैं, एंड टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स they absolutely confer with the requirements of what is written in our traditional Ayurveda scriptures is what Rajiv Bansal ji's responsibility, sir. Welcome to the show. And finally, our last panelist for the day, Sri R. Saravanan. आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फैक्ट्रीज यूनिट के इन DXN इंडिया. DXN इंडिया जैसे कि हम जानते हैं भारत की एक और अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से है, और गैनोडर्मा प्रोडक्ट्स जो इनके हैं मशरूम रिलेटेड उसके लिए काफी फेमस है. So as the head of the factories division in DXN India, Saravanan ji is responsible for the setting up of new units of the company, looking after the entire operations of the existing facilities of the company, and of course all the associated functions like quality control, production control. Sir, welcome to the show. Right. So just one request, I would request everyone to kindly mute themselves and unmute only when it's their turn to speak, so that it becomes easier for the audience. Moving on. So, of course, I'll now like to start with, let's say, Dr. Raghuveer first. Yeah. So, sir, tell us something about the first thing first, tell us something about the manufacturing facilities, being handled by you. And we would like to know everything, sir. What's the production capacity, number of people employed, and also if you can share with us more details on any specialized industrial process which you have adopted, engineering solution, or any special equipment that has been put to use. Sir, the stage is all yours. बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी. सबसे पहले तो आपका और I would like to congratulate you and the entire team of DSA for organizing such a good panel discussion meeting. Am I audible clearly to you? Yes, sir, you are clear audible. No issues. जी. So I actually I am in the manufacturing line for the last 2.5 decades now. And what I could see is that the manufacturing activity has taken a complete, you can say U-turn. पहले जो होता था बिल्कुल एक अलग तरह का था कि भाई कि हमने पैरास्टामोल की गोलियां बनानी है, हमने एस्प्रिन की गोलियां बनानी है, हमने आइबुप्रोफेन की गोलियां बनानी है, दर्द का निवारण करना है, बुखार का निवारण करना है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा हो गया कि सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज बिकम एक, समझिए ये एक इंसान के 2 आंखें हैं. अगर एक तरफ अगर बाईं आंख से आप अगर मान लीजिए बेचते हैं, सेल करते हैं, तो दाहिनी आंख से आप उसको सपोर्ट करते हैं. तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मैंने देखा है कि आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि वी आर बिहाइंड द स्क्रीन, हम पर्दे के पीछे रहते हैं. लेकिन कोई भी गाना तभी सुपर हिट होता है जबकि गायक उसको बड़े मन से गाता है. होंठ हिलाना तो सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन गाने को अच्छी तरह से गाना थोड़ा दिक्कत होता है. तो मेरी करंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अगर आप देखें तो वी आर इनटू 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. वन सेटअप इज मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट्स फॉर लाइफस्टाइल, जिसमें हम FSSAI एंड आयुष के लाइसेंस के अंतर्गत जो है पूरे वर्ल्ड में माल बेचते हैं. हमारी फैक्ट्री WHO GMP सर्टिफाइड है, US FDA सर्टिफाइड है. वी आर वर्किंग विद द EU GMP. तो सारे जितने भी क्रेडेंशियल्स होने चाहिए एक अच्छे कंपनी को चलाने के लिए, सारे क्रेडेंशियल्स हमारे कंपनी में है. और दूसरी सेटअप हमारी जो है सर वो हर्बल एक्सट्रैक्शन की है. तो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसकी जो API है जिसे हम बोलते हैं जो मेन उत्पाद है, वो उत्पाद जो है हमारे खुद के एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री में पैदा भी होता है. तो अब हमने क्या किया है कि हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन कर लिया है. आपने जैसे बताइए प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात, तो हमने इसको रिवर्स इंटीग्रेट नहीं करके फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर दिया है. तो हम सबसे पहले API खुद बना लेते हैं,
उसी से हम उसकी फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, डेवलपमेंट करके फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं और हम ब्लू लाइफ में उसको लेकर बेचते भी है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और हमारे बीच का संबंध इतना गहरा और इतना प्यारा है कि मैं जब से देखा हूँ डीएसए को, क्योंकि मैंने सर्वोत्तम केयर के जैसी कंपनी में नौकरी की है, तो आप जानते ही होंगे कि एमवे के सारे प्रोडक्ट सर्वोत्तम में बना करते थे एक समय, जब एमवे की खुद की फैक्ट्री नहीं होती थी, तकरीबन 10-12 वर्ष माधवन जी समझते होंगे कि बनता था प्रोडक्ट हमारे बद्दी वाले यूनिट में। और क्वालिटी का जहां तक है, तो क्वालिटी के लिए आई विल डेफिनेटली से दैट माधवन विल रेज हिज थंब that we have never compromised on the quality, and quality cannot be compromised in direct selling because यहाँ आपकी जो पहुंच है कस्टमर के साथ डायरेक्ट होती है, 1-on-1। आप प्रोडक्ट को दवाई के दुकानों में नहीं देते हैं, दवाई के दुकानों से कौन सा बंदा ABCD खरीदता है और लेके जाता है, खाता है, वापस आकर बताता है या नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहां डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बात आती है, आपकी प्रोडक्ट जो है कस्टमर के हाथ में जाता है डायरेक्ट, तो उसने वापस पलट कर आपको ही जवाब देना है कि भाई आपका फलाना प्रोटीन पाउडर मैंने लिया, जमा नहीं, आपका उस वो लिया मैंने, जमा नहीं। तो हमारा सेटअप ऐसा हमने बनाया सर कि हम क्वालिटी और हम जो सीखे हैं, कल हमने जो सिप्ला में, एबर्ट में या सर्वोत्तम में हमने जो सीखा है, वही हम आगे लोगों को दे भी रहे हैं। तो वी आर, अब मैं खुद को बोल नहीं पाऊंगा कि वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट बोलता है सर। जब हम प्रोडक्ट बना के आपको देते हैं, आप उसको जब बाजार में बेचते हैं, तो आप खुद बोलते हैं कि भाई ग्लिस्टर का टूथपेस्ट यूज करते हैं तो मजा आ जाता है, या दूसरा टूथपेस्ट यूज करने का मन नहीं करता है। तो किसी ने इस ग्लिस्टर को बनाया ही होगा सर, तो बनाने वाला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको यूज करने वाला या बेचने वाला है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर करेंटली मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स, सोप, सॉल्यूशंस, क्रीम, जेल्स। इसके अलावा हमने भी एक न्यू प्रोसेस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जो इंट्रोड्यूस होकर 3.5-4 साल हो चुके हैं। सबसे पहले ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने ही उसको लिया था, ओरो डिसॉल्विंग फिल्म। ये बहुत पतली सी फिल्म आती है, जो आप समझिए, जो जब चावल बनाते हैं तो उसकी जो कंजी निकलती है, जिसको आप स्टार्च बोलते हैं ना, वो कंजी से ये बनता है। और इसमें जो है हम दवाई का स्प्रे करते हैं, और ये आप एक छोटे से डब्बे में रखते हैं और निकाल कर अगर आप जीभ में रख लिए, तो आपको समझिए आपकी मेडिकेशन भी हो गई। तब ये धीरे धीरे प्रोसेस इतना आसान होता, लिबरल होता जा रहा है कि अब आपने दवाई कैप्सूल खानी नहीं है, आपने टैबलेट निगलना नहीं है। अब आप सिर्फ एक जीभ में पतली सी पत्ती रख लीजिए, एक छोटी सी फिल्म, और आप समझिए कि यू गेट व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड। इसके अलावा धीरे धीरे जो है ये इंडस्ट्री गमीज की ओर बढ़ता जा रहा है सर। जो आप देखते होंगे जेलीज, चॉकलेट्स लोनावाला में बिकते हैं बहुत, उसमें दवाई का इंसर्शन जो है बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ा हुआ है। तो हमने गमीज की लाइन का भी ऑर्डर दिया हुआ है, तो गमीज की लाइन भी हमारे पास आ रही है। और हम ब्लू लाइफ में एक प्रोडक्ट ऑलरेडी गमीज का दे रहे हैं अभी बना करके छोटे पैमाने पे, इसको हम बड़े पैमाने पे लेके जाना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहना यह चाहता था सर कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मैंने जितना देखा है, डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट की जी फीचर्स जितने अलग होंगे, थोड़ा अगर अलग दिखेगा, वो उतना ज्यादा जो दिखता है वो बिकता है, बस यही प्रोसेस है समझिए। तो देखने में ये जितना अच्छा लगेगा वो बिकेगा उतने अच्छे से। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव चेंज द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट, कि नॉर्मल कन्वेंशनल थेरेपी से हट करके हम जो है डिलीवरी सिस्टम में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि द कस्टमर इज बिकमिंग मोर हैप्पियर, एंड वी आर आल्सो adequately getting direct contact with the customer, exactly the feedback also we are getting. This is what we are doing. और करीबन 100 लोग काम करते हैं सर हमारी कंपनी में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है, तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। और करीबन 900 SKU मैं बना रहा हूँ सर, अभी 900 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ अलग अलग। और मेरे अपने खुद के 2 पेटेंट हैं। एक हमने आर्थराइटिस पेन का क्रीम है, उसको पेटेंट किया है सर। और एक हमने विटामिन डी को जो है ट्रांसडर्मल, फर्स्ट टाइम इन द ग्लोब आपका solution है, लोशन है। It is like a gel. One press, one pump will give you 5,000 international unit of vitamin D3, and you rub it in your groin like this, and you get 5,000 IU once daily. 2 बार आप लगाएं 10,000, 6 बार लगाएं 60,000। तो आपको डी लेने की, खाने की जरूरत नहीं है। क्रीम लगाइए, ऐसे ऐसे कस लीजिए, और आपको ये विटामिन डी मिल जाता है इससे। और इसमें हमने प्रोडक्ट को भी, प्रोसेस को भी, और एप्लीकेशन को, तीनों को 2032 तक पेटेंट करके रखा हुआ है, इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल, व्हिच कैन नॉट। सो द प्रोडक्ट विल कम इनटू द मार्केट वेरी सून। इतना बस कहना चाहता था सर, और कोई अगर विशेष प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। Yes, sir. Great to know, sir, and that's why these sessions, they matter a lot, because हमारे direct sellers, they should also get to know कि उनके जो products हैं, देखिए at the end of the day, product is the backbone of your business. अगर आपका product अच्छा नहीं होगा, so eventually long run में all of these companies, why these are famous, why Amway is Amway, or why IMC is IMC, or why Blue Life is Blue Life,
why DXN is known is because of the benefit that the product offers. And you are the real heroes. जैसा मैंने beginning का, you stay behind the scenes to ensure that the product that comes out of the manufacturing unit is the real star or is the real superhero. Moving on to Madhwanji. So Madhwanji, as I mentioned in the beginning, Amway again is one of those companies who is as old as direct selling in India, and to head the manufacturing facility of a company which carries such legacy is a big job in itself. So share some details, sir. Manufacturing facilities being handled by you, production capacity, number of people employed, and also any specialized industrial process or equipment, anything that you'd like to share with our audience. Sure, sure. Am I audible, Chetan? Yes, you're audible. Oh, okay. So, as Raghavi ji said, we used to make our most of our products from contract manufacturing facilities, Sarvotam and Baddi. So, this manufacturing plant, which is the first in India, our own manufacturing plant in India, we started around 7 years before. That's when we started manufacturing. And currently, we have around 9 assembly lines uh, across different product categories like powder. In nutrition supplements we see like powder, tablets in different forms like solid doses, two-piece capsules, soft gelatin capsules. And we have another building inside of the same premises which manufacture oral care where Glister is famous. Then our artistry, attitude, lotion, shampoos, all of these are manufacturing now. So we have around 9 assembly lines, 10 mixing systems, and the plant is built with a long-term perspective in mind. That is like till $1 billion revenue this plant can cater to. And on numbers as such, we employ around 300 direct employees, another 300 uh, who are the supporting staff, like housekeeping, security, and all that. And we are also uh, very happy that we could employ a lot of gender diversity. So we employ almost like 30-40%, 35% of our people who work in the plant are female employees. We also, even though we are there in the south of India, we employ people from across the country. Like at a time, we used to have 13, 15 states, people from 13, 15 states working for us. So that's the kind of regional diversity which also we are very proud of. So this is kind of a glimpse of what we do. And now almost like we still have some amount of contract manufacturing. Some of our home care products are still made from through our contract manufacturers, but most of it, almost like 80%, 85% is in-house. So this is kind of an outline of what we do in the plant. We do have future expansion plans where, as Ravi said, there are a lot of new forms, new product categories which are picking up, like what Ravi said on the gummies. The gummies getting picked up. We also have a lot of traditional herbs, the Indian traditional herbs, the product categories picking up. So there are multiple formats, technologies we work with, which are currently in pipeline. Our research and development team, which sits in India, and also we have a global team who supports us, where we bring in the best in the world to India. So both of us work together in tandem, and we bring in the latest products. And specifically, if I have to talk about any specialized industrial process or engineering solution, is like I'll probably like you touched upon that in direct selling, the big difference between regular FMCG products and direct selling products is uh, the customer is very near to us, right? Like they buy directly from us, so any feedback will directly come to us. So quality becomes, as you said, that becomes the paramount or the first thing what any direct seller who is buying from Amway or any other direct selling company will look for. So one of the things on quality, if I say, in any of our nutritional products,
every nutritional product goes through an X-ray equipment. Each product is scanned through an X-ray to find out whether any contaminant is there or not. So I just want to give, so it can be so this is to ensure that like even a small contaminant like 1 mm or 2 mm, anything more than 1 mm or 1.5 mm, any glass piece or wood or any metal contamination, if it is there, the X-ray image will be able to capture it and will reject the product, and our customer doesn't get impacted by us. Just want to give this as a piece of, there are multiple systems, but as you asked for one specialized thing, I thought I can share this with you. Definitely, sir. And yes, great to know that such precise care is being taken to ensure that the product that gets packed in the containers is absolutely top notch. And all thanks to direct selling companies for I would say culminating high end engineering into our daily manufacturing practices to ensure that the product quality remains top notch. And I remember that once I heard somewhere that initially when the direct selling companies started manufacturing in India, when nutraceuticals and these products were new to the Indian market, so the immediate concern was the air and the water quality, because to manufacture certain kind of products you need water quality up to a certain level which was not available easily in India. And that's why especially the water softeners and other plants had to be imported to ensure that the basic raw material is at least of the prescribed quality. So yeah, that's great to know, sir. Moving on to the next panelist, Rajiv Bansal ji. Sir, yours is a specialized Ayurvedic firm. Now, every company has Ayurvedic products in its line, but IMC is a dedicated Ayurvedic company. And when it comes to Ayurveda, you have to, apart from manufacturing, आपको जो प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन जो आज से 20,000 या 50,000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, आपको वो इंश्योर करनी है कि उन्हीं प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे आपका प्रोडक्ट बने. सो स्टार्टिंग विद यू सर, आप भी कुछ बताइए अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में. हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, आपके कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, एंड एनी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. राजीव जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हैं जी. सॉरी, अभी आर यू गेटिंग द वॉइस? ओके, यस सर, यू आर ऑडिबल सर. या थैंक यू चेतन जी, थैंक यू वेरी मच. जैसे अभी आपने कहा कि आईएमसी, हम लोग आयुर्वेदा के बारे में ही हम लोग जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे 95% प्रोडक्ट आयुर्वेदा में हैं. कुछ प्रोडक्ट हमारे फूड कैटेगरी में आते हैं खाली. तो अभी जैसे अभी हमारे बाकी साथी लोगों ने बताया, आयुर्वेदा जैसे अभी आपने भी कहा, आयुर्वेदा कोई अभी का कोई ये मेडिसिन नहीं है. ये सालों साल, हजारों साल पुरानी एक हमारी मेडिसिन साइंस है. लेकिन अभी जो चैलेंज है कि हम लोग उस साइंस को, चूंकि हजारों साल पुरानी साइंस है, उसको हम कैसे मॉडर्न के साथ फ्यूजन करके हम एक अच्छा उसको सेप दे सकें. क्योंकि आयुर्वेदा मीन्स कि आपने जड़ी बूटियां लिया, घोटा, उसको पिया, वो बड़ी अनकंफर्टेबल प्रोसेस होता है किसी चीज को कस्टमर को यूज करने के लिए. तो उसको कैसे इजी शेप में दिया जा सके, आईएमसी ने सब बहुत काम किया है, काफी काम किया है. हमारी काफी बड़ी एक टीम है जो इस पे सारा टाइम काम करती है कि कैसे इस प्रोसेस को, जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है, हम इसको मॉडर्न फ्यूजन के साथ काम करें और उसको लोगों को इजीली जो उसको ले सके. हम लोग वो जैसे कि सारे हमारे पास आज आयुर्वेदिक सेक्शन में या इवन हमारे जो पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स भी हैं, वहां भी हम लोग एक ऐसा हर्ब्स का ब्लेंडिंग करते हैं जिससे कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले. क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदा के पास ही परमानेंट क्योर है. जो मॉडर्न साइंस ठीक है, इसको कोई हम डिनाई नहीं करते कि मॉडर्न साइंस ठीक नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा के पास में क्योर है. तो वो क्योर करने के लिए लेकिन जरूरी है कि हम उसमें प्योरिटी और हमारी जो क्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम उसको मेंटेन रखें. अगर उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो आयुर्वेदा का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा. और काफी कंपनियों ने, मैं तो कहूंगा, मैं किसी का नाम हम लोग यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन आयुर्वेदा क्यों डिफेम हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको प्रॉपर्ली एक समझा नहीं कि आयुर्वेदा है क्या. बस उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आयुर्वेदा है, देसी दवाई है, इसको हम यूज कर सकते हैं. नहीं, आयुर्वेदा अपने आप में बहुत बड़ी एक साइंस है सर, इट्स ए बिग साइंस. इसको समझना और इसको ठीक से इंप्लीमेंट करना रियली इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब मुश्किल है, जिससे हम लोग काफी मतलब आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा.
तो अभी जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास में जो आज सेक्शन आईएमसी की जो फैक्ट्री है, इसमें हम लोग आयुर्वेदा में हम लोग हैं, कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर में हैं, सोप्स जो बेसिकली ऑयल बेस होते हैं, ऑयल बेस में जितने कि हमारे इनको सपोनिफाई करके हम लोग बनाते हैं वो है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग हैं, चोनप्राश जो अवले होता है उसमें हम लोग उसमें हम लोग आसब आरिस्ट उसमें हम लोग काफी काम करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बैटरी प्रोडक्ट में भी हम लोग हैं, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्योंकि ये सब चीजें एक सीक्वेंस से आई है हमारे पास, क्योंकि वो सीक्वेंस से क्यों आई कि जैसे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्यों गए कि हमारे पास में चूंकि हम एक आयुर्वेदिक कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी में सारी हमारी हर्बल जड़ी बूटियां हम लोग यूज करते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसका जो वेस्ट हम लोगों ने लिया उस वेस्ट को भी यूटिलाइज हम करें 100%, ताकि नेचर को भी हमको ऐसी चीज वेस्ट ना छोड़े, ताकि जो हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो हमें एक हम लोग उसको एक एग्रीकल्चर ग्रोथ बूस्टर बनाते हैं, जिससे काफी लोग यूज करते हैं, और हमारे काफी अच्छा प्रोडक्ट है एग्रो बूस्टर के नाम से, जिसमें काफी लोग फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काफी यूज करते हैं उसको, उससे काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मेरा जो मीनिंग है वो ये है कि आयुर्वेदा को हम लोग जो आईएमसी करती है वो एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर रघुवीर जी ने बताया कि हम लोग जैसे एक एलोवेरा है, हमारा एक प्रोडक्ट एलोवेरा है, अब एलोवेरा की फार्मिंग हम खुद करते हैं, हमारे खुद के फार्मिंग है, वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वहां पर कोई भी पेस्टिसाइड कोई भी यूज नहीं करते। वहां से हम लोग अपनी फैक्ट्री में लाने का हमारा करीब 10 घंटे का ट्रेवल टाइम है, बिकॉज राजस्थान में इसका मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है, तो वहां हम लोगों ने उसको क्रिएट किया हुआ है। वहां से हम लोग अपनी फैक्ट्री को लेकर आते हैं, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स। तो जो वहां पर अभी हम लोगों ने क्या किया, उसको एक अच्छी बेस्ट क्वालिटी देने के लिए हमने वहां से उसका एलोवेरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कि उसमें से निकालना बहुत जरूरत है, उसको एलोइन बोलते हैं। काफी लोग एलोवेरा में कैसे करते हैं दोनों, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहां से हमारा फार्मिंग है, फार्मिंग से हमने उसको कट किया, कट करने के बाद हमने एक स्पेस सिस्टम बनाया हुआ है, वहां पर हम उसको ट्रे में पुट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली 8 से 10 घंटे में जब फैक्ट्री पहुंचता है, यूनिट पहुंचता है, तो उसका एलोइन पार्ट ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है। फिर हम यहाँ लेके आते हैं उसको, उसकी फिर प्राइमरी क्लीनिंग, सेकेंडरी, टर्सरी, जो उसका पूरा प्रोसेस है, उसको पूरा प्रोसेस को यहाँ पर हम करते हैं। तो ये हम लोग जो हमारी कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 100 टन पर डे हम लोग आज की डेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड हमारा जो मैन पावर है ऑलमोस्ट 450 मैन पावर हमारे पेरोल पर है अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज चूंकि हमारे करीब करीब मोर देन 650 प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट काफी सारे हैं, एसक्यूज भी काफी सारे हैं, एंड काफी जो प्रोसेस है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर काफी हमारी ऑटोमाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो कि हमारी शिफ्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ मैन पावर लगती है। तो हमारे पास करीब यहाँ 450 लोग अप्रोक्सीमेटली काम करते हैं, एंड 100 टन पर डे हम लोग हमारी कैपेसिटी है जो हम लोग यहाँ पर इसको बना सकते हैं। रही बात इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदा के अंदर में खास बात एक ये है कि आज जितनी हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उसके अंदर में हम लोग जो हम खासकर जो हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ जो जितने बेसिक पैरामीटर्स हैं, इवन हम लोग आज की डेट में जड़ी बूटियां जब हमारा रॉ मटेरियल टेस्टिंग होता है, तो रॉ मटेरियल टेस्टिंग में हमने काफी सारे अपने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जहां पर इवन उसमें पेस्टिसाइड ना हो, क्योंकि आज की डेट में पेस्टिसाइड खाली फ्रूट्स या खाने में या उसमें नहीं आता, आजकल इन हर्बल्स में भी आने लगा है, क्योंकि वो लोग जो जितना भी कल्टीवेट करते हैं कहीं ना कहीं से बाया आ जाता है, और जो पेस्टिसाइड आया तो हम समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या बनेगी। तो ये हम आज की डेट में जो हम सारा काम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम लोग अपने एसपीटेल्स यूज करते हैं, जैसे जीसीएमआर यूज करते हैं, हैवी मेटल्स हमारे आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप अगर देखें हम इंडिया में क्यों सिमट के रहे हुए, हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों है, कि लोगों ने इस चीज को अभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज हमारे आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है इसमें हैवी मेटल्स एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। हम अगर इसको कंट्रोल करके चलाते हैं, हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को अगर हम फॉलो करें, तो डेफिनेटली हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको हम भेज सकते हैं। जो काफी बार क्या होता है कि कई कुछ कंपनियां, मेजर कंपनियां जो उस पर ध्यान नहीं देती, उन्होंने भेज दिया, और भेजने के बाद वहां पर उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट हुआ बोले आयुर्वेदिक मेडिसिन, उन्होंने उसको बैन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एक रोल है, लेकिन आईएमसी बहुत एक चैलेंज ले रही है इस चीज के लिए। अभी हम लोग कई कंट्रीज में अभी हम लोग जा रहे हैं, और वह हम लोग पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट दें जिसमें कि लोगों को ये विश्वास आए कि नहीं, ये जो मेडिसिन है, ये जो एक आयुर्वेदिक पद्धति है, ये वास्तव में काम करती है।
एंड इसके साथ साथ हमने जो एक नया अभी एक मैं कहूंगा इसको इनोवेशन ही कहूंगा कि लोग ना कॉस्मेटिक्स के अंदर में जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है जैसे क्रीम, शैम्पू, लोशन, जेल, इसको आज हजारों कंपनियां बनाती है, लेकिन एक इसमें एक अभी हम लोगों ने आईएमसी ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया है जिसको हम लोग जो है माइल्डर प्रिजर्वेटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली जब हम कोई एक बैच बनाते हैं तो दूसरा बैच लेने के लिए हमें उस सिस्टम को क्लीन करना पड़ता है। जब उस सिस्टम को क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं हम लोग, और जब केमिकल्स यूज करते हैं तो वो काफी हार्मफुल होते हैं। हम लोगों ने एक माइल्डर टेक्नोलॉजी इसको बनाया है, जो हमारा हमने प्लांट डिजाइन किया है, उसमें हम 80 डिग्री से अपना नॉर्मल वाटर को सर्कुलेट करके वहां पर हम उसको पूरा सीआईपी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आए उसमें कोई भी चाहे बैक्टीरिया ग्रोथ है कुछ भी उसमें नहीं मिले। तो ये एक आईएमसी ने काफी बड़ा एक इस पे काफी काम किया है और काफी मतलब इसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी काफी किया है इस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आज जैसे कि हम लोग चाहे क्रीम बनाएं, हम फेस पे यूज कर रहे हैं, बॉडी पे यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्किन ऑल्सो बहुत सेंसिटिव है। इवन हम लोग अभी बच्चों के काफी प्रोडक्ट अभी हम लोग अभी ला रहे हैं, काफी बच्चों के प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें आई थिंक वो मैं कह सकता हूँ नियर टू नेचुरल प्रोडक्ट है, नियर टू नेचुरल प्रोडक्ट जो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, जो मतलब हम क्लेम करेंगे कि जो 6 मंथ से लेकर के 2 इयर्स के बच्चों को सेफली दे कैन यूज। तो आईएमसी ने काफी इस पे काम किया है सर, और अभी हम लोग और भी काम करना बाकी है, क्योंकि ये तो एक एंडलेस काम है, एंडलेस काम है, जितना काम कंटिन्यूअस साइकिल है सर। जी कंटिन्यूअस साइकिल है सर, बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, एंड एब्सोल्युटली ग्रेट टू नो कितना आपका, मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ कितना बड़ा आपका सप्लाई चेन आपका कितना इफेक्टिव रहा होगा। राजस्थान से प्रोडक्ट आता है, फैक्ट्री में जा रहा है, बाय ट्रेन या बाय रेक्स जाता है, एंड देन यू नो एक सर्टेन टाइम के अंदर उसको फाइनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो ऑल थैंक्स टू योर एक्सपर्टीज सर। मूविंग ऑन, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर Savanan from DXN. DXN, as we all know, is a reputed company, incidentally started by a person who graduated from India, from Indian Institute of Technology. And DXN is known for the Ganoderma based product, Ganoderma mushroom. I would say they introduced this herb to India and international markets. So then also we know that DXN is in the process of setting up a new manufacturing facility in Telangana. So again, Mr. Savanan, if you can share more details on how many facilities DXN is operating, how many people are employed, any specialized engineering process that the company has adopted. So stage is all yours, sir. Thank you, Mr. Chetan. Okay, DXN is having their own manufacturing facilities. The factories are located in different places in India, like in Pondicherry, Chittipet. As you told, like it's a mega project there, doing there in Telangana, and factory at Bhatti is the state of Himachal Pradesh, factory at Guwahati at state of Assam. Like we are the facilities of manufacturing Ayurvedic, food supplement, beverages, personal care, home care product, cottage product, and also agricultural. So that the facilities is going to be like a form of capsuling, tableting, bottling, like a consumer convenient packaging that DXN have the facility to do. And like this factory is having the much more production capability and capacity to produce those kind of product. And also with the product capacities, DXN is normally going to cater not only in India, it is also going to cater in neighboring countries like Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. Sorry, like with the raw materials, actually we have the own facility to develop and prepare our raw materials. Like we are the own source. We are cultivating our own. Like as you told, mushroom, we are doing our own cultivation. We are sourcing raw material. Not only the mushroom, and also we have the facility to have a spirulina and other noni kind of product. And also we are taking the like a agro product. That's and like DXN is like is employed is many, I mean more employment. They were given almost 300 regular manpower, and also given at almost 400 like supporting operations. And now like you may adjust the camera, sir. No issue. Yeah. You may lower down a bit. Lower down a bit. Yeah, it's okay. It's okay now, sir. It's okay now. Yeah. Like, and also we are taking a support from the contract manufacturing.
So to develop our business there in all the places, like to give a facility to the others also. That's DXN doing like that. And we have actually the DXN company is certified is a GMP certification, and all the like Ayurvedic certification, FSSI certification, we got everything is the DXN is having. And also about the quality concern, like each and every places, even the sourcing of raw material and using of raw material, making a productions and the packaging, bottling, everything will be under the strict quality control. So actually direct selling company, without quality we cannot compete with the market. So these are the facilities having the DX. Right. Thank you. And how soon is your Telangana plant going to get operational? Yeah, it is already there. Almost it's a completion. Like we are expecting in another couple of months, we will give you the commercial production. So it will be huge. We'll support. It will start with a huge support in the market. Great, sir. Great to know that. Great to know. So clearly, one thing that has emerged, as I also discussed in the beginning, and as you can get it from the submissions of our expert panelists also, all of their manufacturing facilities are centered around the concept of quality. So clearly, quality control is an important challenge, is an important issue. And as I said in the beginning also, and I'm sure all of us agree on this, direct selling companies are known because of the high quality products that they offer to their consumers. So let us now quickly understand what exact steps or what special measures are being taken in the manufacturing units to ensure that the product that comes out of the assembly line, is completely checking all the tick box which were suggested for it in terms of quality. So we'll again start with Dr. Raghuveer first. Sir, any Yeah. details about the quality control Yes, measures? Chetan. Yes, Chetan. It's nice that we have come back to the same question. Now, what I heard from all the other companies, and I've noted down some points also. Previously, products which were, nutraceuticals or Ayush were not being कंट्रोल्ड और गवर्नड बाय दी गवर्नमेंट. और हमारा ये आदत शुरू से रहा है कि अगर हम रेड लाइट नहीं देखेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, हमको जब तक चालान नहीं लगेगा, फाइन नहीं लगेगा, हम सुधरेंगे नहीं. दिस इज व्हाट वाज यस्टरडे. अब क्या है, सरकार भी धीरे धीरे जो है अपने बाहें कस रही है. तो इवन दी कंपनीज दोस हु आर विद दी एफएसएसआई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स और दी आयुर्सूटिकल और कॉस्मोसूटिकल्स. Now, when you talk about the cosmetic part also, previously cream, soap बोले तो it was like a cosmetic product. अब वो जो है, there is a ceutical added to that. So if you are claiming anything which is related to cosmetics and this been manufactured in a unit, it also has to pass through the same governance which has been coming recently. So if you see the gadgets of FSSI which has been coming up in the last 6 years, 2016 की प्रिंसिपल्स और आज के प्रिंसिपल्स में भी जमीन आसमान के फर्क हो गए. Now we have to practice GMP and bring GMP into practice. GMP एक बड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है. सब लोग आजकल इसका यूज कर रहे हैं कि हम GMP, बट GMP समथिंग 1.5 महीने का भी अगर आप पैनल डिस्कशन लगाएंगे तो भी छोटा पड़ जाएगा. ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है सर. बस लेकिन एक चीज आपको बोल सकता हूँ मैं कि आना और जाना किसी भी प्रोडक्ट का, इट हैज टू बी यूनिडायरेक्शनल. अगर आप एक कदम सामने की ओर चलते हैं तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं. अगर आपने एक कदम भी पीछे लिया तो दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल ब्रेकिंग एंड द क्रॉस कंटामिनेशन विल हैपन. हमारे बंसल साहब ने जो बोला उनके वाटर सिस्टम के बारे में, ये वाटर सिस्टम वही है, नए पद्धति के सिरे से आयुष में और फार्मा में न्यूट्रा में ज्यादा आ गया है. लेकिन हम सर 2002 में CIP यूज करते थे. 2002 में हमने 80 डिग्री एलिवेटेड टेम्परेचर में नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन पास किया है पूरे लूप लाइनों में. जबकि ईच वहां पे क्या होता था सर, वो एंटीबायोटिक था. एंटीबायोटिक में अगर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ अटैच हो गया तो समझिए आपने निमोनिया की दवाई ली, आपका निमोनिया ठीक हो गया और आपको टाइफाइड हो गया, बिकॉज ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेस उसमें आ जाता था. तो अब ऐसा सर उस समय से ही हम लोग यूज कर रहे हैं. तो दैट सब्जेक्ट हैज, इट इज अ पार्ट एंड पार्शियल, क्योंकि आई एम द पर्सन हु ब्रॉट द सेफोड्रॉक्सिल ओरल सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम इन द एंटायर ग्लोब. I'm talking about 2003, जब आपने सेफ्लोस्पोरिन का नाम ही नहीं सुना होगा, जब सिर्फ पेनिसिलिन बनता था इस दुनिया में, और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्पिसिलिन और मॉक्सिसिलिन आता था. हमने उस समय सेफ्लोस्पोरिन लॉन्च कर दिया था सर. तो क्वालिटी का जहाँ पे आप बोलेंगे सर इक्विपमेंट जनरेटेड क्वालिटी, इट इज नॉट मैन मेड, इट इज इक्विपमेंट मेड.
आपने सुना होगा सरवणन जी को एचपीएलसी के बारे में बोलते हुए और जीसी के बारे में बोलते हुए आपने बंसल साहब से सुना होगा। एक सर मशीन और है जो एमवे वालों ने इंट्रोड्यूस किया था क्वालिटी से रिलेटेड। अब माधवन साहब है इसलिए उनको उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, there is a machine in which the HPLC is added to an MS. It is called LCMS. वो जो है that detects, जो एक्सरे मशीन बोला ना उन्होंने, वो मशीन है सर एक्सरे मशीन। अगर आपने एक मल्टीविटामिन टैबलेट को उसके अंदर डाल दिया तो वो एक एक इंग्रेडिएंट को खुद ब खुद अलग करता चला जाएगा और हर इंग्रेडिएंट का एनआरवी वैल्यू आपको बताता जाएगा, हर इंग्रेडिएंट का न्यूट्रिशनल फैक्टर आपको बताता जाएगा, और आपने अगर उसमें मिलाने में चोरी की है तो वो भी बता देगा। तो ये मतलब समझिए कि आपके लिए ये एक तरफ से चैलेंज भी है और दूसरी तरफ से आपको ये समझने के लिए आप ये समझो कि आपके यूनिट का एक पुलिस भी है कि अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया, अगर आप एचपीएलसी में विटामिन सी डाल करके बोलेंगे तो वो बताएगा कीक मोनोग्राफ, हाँ आपने विटामिन सी डाला है। और अगर आप एमएस में उसी विटामिन सी को डालेंगे तो वो बोलेगा आपने 869 मिलीग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जेनरेटेड फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया डाला है। तो ये सर ये क्वालिटी में फर्क आया है कल में और आज में। कल था ट्रेसेबिलिटी, आज हो गया सर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो यू हैव टू हैव यूओसी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, जो है आज के दिन की मशीनें आराम से बताती हैं। देयर इज ए मशीन सर, यहाँ आने में थोड़ा सा समय लगेगा, हमने उसे यूज किया था हमारे यूएस प्लांट्स वगैरह में। जैसे NIR, इट इज नियर इंफ्रारेड, एक ही कंपनी बनाती है सर व्यू की। उसमें आपको आप प्रोडक्ट को डालने की भी जरूरत नहीं है, देयर इज ए प्रोब, आपको प्रोब को ऐसे टैबलेट में टच करा देंगे तो वो पूरा रिपोर्ट जनरेट, ईसीजी की रिपोर्ट होती है ना, वैसा रिपोर्ट निकाल कर दे देगा। तो ये मशीनें भी आ रही हैं सर, आप लोग बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, आप लोग इसको ले आइए, लॉन्च करिए, ये सब मशीनों के साथ प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी और बढ़ेगी सर। और जीएमपी, WHO जीएमपी, हम आज क्यों बोलते हैं सर, आप बंसल साहब ने बोला हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं सर, हमारे स्टैंडर्ड शुरू से इतने स्ट्रिंजेंट रह चुके हैं, हमने सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया कभी। अगर हम उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किए होते थे तो आज यूएसएफडीए वाले आकर हमसे सीखते थे सर। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि हम हमेशा गाड़ी तब रोकते हैं जब सिग्नल लाल होती है। हम ये चाहते हैं कि सर गाड़ी सिग्नल से पहले रोक लो खुद ब खुद। अगर ये पद्धति हम लोग जो है सर, बड़े बड़े कंपनियां आप लोग अगर अपनाना चाहें तो सर ये हम लोग यूएसएफडीए के पिता कहलाएंगे, ये मेरे से आप ले लीजिए आने वाले दिनों में। बस यही मेरा सबमिशन है। ग्रेट टू नो सर, एंड आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे ऑडियंस है, हम उनसे हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जिनसे हम अलग अलग अपने इवेंट्स में मिलते रहते हैं और वो जानते हैं कि सर आईडीएस से क्या करता है सर, इतनी कंपनीज हैं, आईडीएस से मेंबर्स हैं, ये हैं। तो आई थिंक आज आपने देखा होगा, सी आईडीएस से इज लाइक अ बिग फैमिली। तो जो हमारी मेंबर कंपनीज हैं दे आर लाइक पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर रघुवीर जी इज एक्चुअली पिचिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ एमवे। वो कह रहे हैं कि एमवे ने जो प्रोडक्ट लगाया हुआ है इट्स अ टॉप नॉच क्वालिटी, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। हमारी ये एक छोटे फैमिली की तरह है, wherein we all are working together। सब ग्रो करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मिलजुल के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। Thank you so much, Raghuveer ji, for this. So moving on, posing the same question to Dr. Madhavan now, or sorry, Madhavan ji now. So although काफी कुछ तो Raghuveer ji का आपके behalf पे has already shared, but anything to add from your side? No, thanks Raghuveer ji for the compliments. It's like most of it when we started the plant, as Raghuveer ji has worked in Sarvotham, where he had set up many of the systems. So we actually we implemented a lot of things which were there in our contract facility, because first time actually when I joined Amway, I joined when Amway was building the plant, and when I and my boss both were from PNG, when we went to the contract manufacturing facility, that is Sarvotham, we didn't have a lot of expectation. We thought, okay, it's just a CM site, it might not have the right system. But when we went there, the kind of hygiene standards and GMP standards what Sarvotham had was phenomenal. It was a very clean facility, so we were very, very impressed. And obviously, when we set up our own plant, it improved from there. So when we talk about quality, some of it has to be there from the design of the facility. So that's what we had done. So if you look at the Amway facility, right from the design, what Raghuveer ji said on the unidirectional flow of product
right from warehouse to the processing facility to the packing facility. So all that is brought, that has to be implemented right from the design of the facility. The design has to be with the right GMP standards. That has been taken care. We had put in a lot of emphasis on that, and then comes, even if you put the best of infrastructure, the best of equipment, X-ray machines, metal detectors, magnets, sieves, whatever controls you can put in, but you need to have the right culture. That's brought by the people. How do we set the right quality culture in the plant? How do we make sure that our people follow the right behaviors? So we emphasize a lot. We invest a lot in our people. Uh, we had built a very good open culture inside our plant where people, if they make a mistake, you don't believe in when I say that. When people make mistakes here and when they find that they have deviated from the procedure, they themselves step forward and say that, yes, I had missed this process or I had deviated from the process. And we have scrapped batches, like we have scrapped batches with crores because someone said that I missed this step. And then we say that, okay, this does this impact the consumer? If it is yes, let's go ahead and reject the batch. So one thing which I'm very proud of in Amway, what kind of culture what you have set up with our people, the expectations what you have set up with our people, that is very good. So right from design, the systems what you have put in, and the culture what we have set with our people, that is what we emphasize a lot. Added to that, obviously, like as Raghviji also said, FSI has the standards or the regulations of FSI has evolved a lot in the last decade. Now, even like recently, they have started even a third-party audit where food safety audit, which has been introduced. So almost every step of this is complied. Amway complies to it. We also had asked for our own certification, GMP certifications, FSC 20,000 certifications. Even our lab, in-house lab, is NABL certified. So we in each step of the process, right from the raw material till we dispatch the finished goods, we make sure that quality focus remains the first. Yeah, that's all I'd like to share. Chetan, you're on mute. So sorry. So sorry. Yeah. So what I was trying to say is that yes, Amway has a legacy. It's a company which is over 100 years old, and the products, you have to ensure that the product which a customer is getting in USA, the same product with same benefit a customer in India should be getting, and that's why as a manufacturing head, it's an added responsibility on your shoulder to comply with this legacy of close to so many decades. And hats off to you for doing such a great job. Moving on, I'll pose the same question to Mr. Savanand now. Savanandji, DXN is, time to time, DXN gets recognized and awarded by various bodies, international bodies, for their products, for their innovative products. So, what quality control measures are being taken by DXN to ensure that the product that is coming out gives the exact benefits which the direct seller is claiming before the consumers? Yeah, Mr. Jitanji. Like directions have the automated machine for the productions. Like putting the raw material, and it's having the very good like a scanning system, the X-ray system. It will find out any extra particles or any other material will be immediately find out. Like it has a very good system of security, and also it's our own. Manufacturing facility like means it's a sourcing of raw material. We are giving the quality raw material to the market, so that our product is having a very good quality concern. And also we have the facility, very good facility there in Telangana. It's machinery, it's automated machineries having the sorry.
Yeah, please continue, sir. You are audible. Yeah. Like because now we have the very good machinery support, and it was a very good support. Like we have the quality product we can able to produce a quality product. Right. Yeah. Thank you. Yeah. Great to know, sir. Great to know. And yes, as I mentioned, DXN is, we know that the company gets awarded every now and then for the product quality, not just in India, but around the world. Moving on to Rajiv ji. Sir, आप लोग being an Ayurvedic company, Ayurvedic herbs की sourcing करना, your responsibility starts from the farming itself. Of course, in case of DXN, they said that we have backward integrated ourselves and हम लोग अपना farming भी खुद कराते हैं. I'm sure आपका भी ऐसा है. So how your actually quality control starts right from the time जब वो किसान शायद खेती शुरू करता है. So how do you manage such a long period of time? अब एक हर्ब आज किसान ने उसकी अगर खेती करी है, मे बी वो 6 महीने 1 साल बाद फिनिश्ड रॉ मटेरियल के रूप में आपकी फैक्ट्रीज में पहुंचेगा, बट आपका क्वालिटी कंट्रोल 1 साल पहले से शुरू हो जाता होगा. सो टेल अस समथिंग अबाउट, सर, आप लोग क्या स्टेप्स इंश्योर करते हैं क्वालिटी मेंटेन रहे? जी चेतन जी, देखिए, जैसे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हैं तो हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे आयुर्वेदिक हर्ब जड़ी बूटियां होती हैं. हम लोगों ने शुरू से एक स्ट्रेटेजी बनाया कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बाकी सब लोगों ने बताया कि हम बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे हिसाब से, वो ये है कि हमारी सोर्सिंग अगर हम लोग उसको प्रॉपर कंट्रोल करें, हमने अपने आइडेंटिफाई ठीक किए जो हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज है, हमें कहां से रॉ मटेरियल लेना है, हम उसी एंड पर सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले उसी एंड पर जहां से हमें लेना है उसको पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पूरा हम देखते हैं कि ये वास्तव में ये सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें दे पाने की कैपेसिटी में है या नहीं है. अभी क्या है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कुछ रॉ मटेरियल्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ जाती है. अब अचानक से डिमांड बढ़ गई तो ये नेचुरल प्रोडक्ट में पैदा तो होता नहीं है, तो लोग उसी के अंदर में काफी सारी चीजें अल्टरेशन करना शुरू कर देते हैं. तो ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है. तो हमारी कंपनी ने शुरू से एक स्ट्रेटेजी बनाया कि रॉ मटेरियल सोर्स से ही अपनी क्वालिटी को स्टार्ट करिए. आप रॉ मटेरियल सोर्स अगर आपके सही है, वहां से आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आगे आपकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और अल्टीमेटली जब आप प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. बट नेचुरल है कि हमें सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्टर साहब ने बताए, माधुन साहब ने भी बताए कि जितने भी सारे प्रोसेस हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में जितनी सारी जो टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो सब टेस्टिंग प्रॉपर्ली हम लोग करें तो अल्टीमेटली हमारे कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है. तो वही फॉलो हम लोग कर रहे हैं. और रियली ये जो इंडस्ट्री है, अपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें आप ये बिल्कुल ठीक है कि हम लोग 1 to 1 सबसे कनेक्ट होते हैं. अगर हमने 1 मिलियन प्रोडक्ट भी मार्केट में दी और एक पीस में भी अगर कंप्लेंट आती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट पता चलता है कि इसमें कंप्लेंट आ गई, जबकि एफएमसीजी कंपनियों को पता ही नहीं लगता क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर तक वो कई चैनलों से पहुंचता है. तो ये बहुत अच्छी बात है. शायद ये कम लोग समझते होंगे कि जो क्वालिटी हम डायरेक्ट सेलिंग वाले प्रोड्यूसर्स देते हैं, शायद वो दूसरे लोग मैं नहीं कहता नहीं देते होंगे, लेकिन शायद हम लोग ज्यादा कंसर्न है क्योंकि उसमें इमीडिएटली एक प्रोडक्ट आता है और आजकल सोशल मीडिया और इतना स्ट्रांग है कि इमीडिएटली सारी चीजें सर्कुलेट होती है. तो क्वालिटी को लेकर बाकी सब लोगों ने सारी बातें बोली हैं, तो आई थिंक मैं इतना ही कहूंगा खाली कि रियली हमें क्वालिटी पे जितना, और क्वालिटी अनएंडिंग प्रोसेस है, हमें जितना क्वालिटी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि नया अभी डॉक्टर साहब ने बताया नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई कुछ मशीन से आ रही है, तो अनएंडेड प्रोसेस है. हमें कंटिन्यूस उस पर काम करना चाहिए जिससे कि हम और अपनी क्वालिटी अच्छी दे सकें. थैंक यू जी बंसल जी, थैंक यू सो मच. एंड यस, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्वालिटी कंट्रोल तो देखिए हर इंडस्ट्री में जरूरी है, बट एफएमसीजी के मुकाबले शायद डायरेक्ट सेलिंग में ये कहीं ना कहीं ज्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी से हमारे साथ जुड़े, आईडीएसए के सर्वे के हिसाब से इस समय 74 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं. तो हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के बेसिस पे इन 74 लाख लोगों की आजीविका निर्भर है. सो क्लियरली कंपेयर्ड टू अदर segments of the overall retail industry या retail sector, direct selling companies are more quality conscious and it reflects in their manufacturing practices also.
Moving on, sir, and before we proceed to the next question, we are almost towards the end of the session. I mean, इतना अच्छा सेशन जा रहा है, अभी तो मेरे पास आधे क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं जो मैं आप लोगों से रेस करना चाहता था, बट आई नो यू आर बिजी, यू नो यू गॉट अदर एंगेजमेंट्स आल्सो. सो आपका बहुत छोटा छोटा मैं रिप्लाई चाहूंगा सर. पहला जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. नाउ ऑफ लेट हम बहुत पढ़ रहे हैं मीडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ये बेनिफिट है. ये एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपकी ओपिनियन के हिसाब से व्हाट रोल इट कैन प्ले इन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया? और दूसरा मैं इसी के साथ एक दोनों क्वेश्चंस को मैं मर्ज कर देता हूं सो दैट वी कैन कंप्लीट द सेशन इन टाइम. एक स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आपके पास ज्यादा ताकत आती है तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है. सो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हम कंपनीज अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज एक्सपैंड कर रही हैं, पर इसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है, इन्वायरमेंट के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो क्या आपकी फैसिलिटी में या आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी स्टेप्स लेती हैं टू इंश्योर दैट द इन्वायरमेंट स्टेज प्रोटेक्ट, या जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है ऑन ओवरऑल द इन्वायरमेंट उसको हम किस तरह से मिनिमाइज करें? सो दीज टू क्वेश्चंस, one club response in 3 or 4 minutes time so that we can conclude the session in time. Technology transfer, how it can benefit manufacturing in India, and what steps are you taking to ensure that the environment stays protected? So again, we'll start with Dr. Raghuveer first. Sir, over to you. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा लंबा अंग्रेजी सा नाम है सर, बट एकदम क्रूड लैंग्वेज में आपको समझा दूं, ये संजीव कपूर की रेसिपी की किताब है, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है आपने जो कुछ सीखा है, आपने जो कुछ बनाया है, सामने वाले को सिखाइए और एक कागज में डॉक्यूमेंट करके दे दीजिए. आई एम वन पर्सन हु इज नॉट वेरी फेवरेबल इनटू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू बी टेकन. आई एम इंटरेस्टेड टू गिव द टेक ऑफ. तो हमने जैसे ऑलरेडी 6-7 कंट्रियों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया है प्रोडक्टों की, and we have also ensured that the technology transfer has been done from our side, and we should not take the technology transfer from others, because the development and research capacity what we have in our country, as rightly told by Mr. Rajiv Bansal, is that from the API stage, from the cultivation stage to the end stage of selling stage, we have got all kind of authentic informations and technology available with us. My personal request, I may be completely wrong or partially wrong, I do not want to go with technology transfer to be taken. I will go with technology transfer to be given. Question number 2. FSSAI, Ayush, nutraceutical, cosmeceutical products do not generate carbons, do not generate pollutions at all. आपने देखे होंगे हम लोग में सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई यूज करता होगा तो 2 टन का बॉयलर यूज करता होगा. और साथ ही साथ उनके जो होते हैं, मैंने जैसे माधवन ऑल्सो टोल्ड that we have got the stringent policies from FSSAI and Ayush evolving around for the last 1 decade. Now it has become mandatory for you to set up a plant with an affiliate treatment plan, ETP. You cannot discharge it to the central ETP also. You have to have your own ETP. और जब आप हर्बल का काम करते हो तो आपको दिखेगा हर वो इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग वाले को प्रोडक्ट बेचता है, दे हैव गॉट देयर यूनिट इन 30% एंड गार्डनिंग इन 70%, क्योंकि उनके वहां कस्टमर भी आए तो वो हरा भरा दिखना चाहिए. तो जितने भी आपके पोल्यूशन रिलेटेड आइटम्स निकलने वाले होते हैं, दे आर ऑल बीन टेकन टू the ETP plant of your own. And then I'm telling you, in 1995 or 2005, when you see Sarvottam's ETP plant, people from US used to come and see the ETP plant. हमारा ऐसा था सर, हम जो है सर वो गंदे पानी को पीने का पानी में कन्वर्ट कर चुके हैं in such a beautiful plant. So carbon emissions and effluent emissions and fudge emissions not there very high in nutraceutical factories. So this is we are still supporting the entire environment with our work. और हम इतना हरा भरा रखते हैं हमारे फैक्ट्री को सर कि उससे हम और ऑक्सीजन देते हैं. एंड पीपल गेट, आप हमारे फैक्ट्री एरिया में कभी आइए, हमारे फैक्ट्री के एरिया का टेम्परेचर पूरे दुनिया से 1 डिग्री कम रहेगा. वी आर सो ग्रीन. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. इसको रिस्पॉन्स में ले लीजिए आप, कि हम लोग जो कंपनियां हैं जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अपना नाम किया हुआ है, पीपल दोस हु हैव सेट अप देयर नेम इन इंडस्ट्री, we should start inviting to the customers now to the factory directly. So somebody tomorrow should say that, you know, I'm buying curcumin ultrasol from Blue Life and I have seen where it is manufactured. I see that this is the product which is manufactured. When they speak quality on the TV, when they speak quality in the panel discussion, they also demonstrate the same. आप जब साल का कोई एक बड़ा इवेंट करते हो तो सर वहां पे आप लाइव वीडियो लगाओ.
where the factory manufacturing process has been seen by the public, because they are your bread and butter, you are their bread and butter. आप उनको ही बेचते हो, उनसे। तो हमने आज कम से कम 50 मिनट में 25 मिनट ये बोला होगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर डायरेक्टली अटैच टू द कस्टमर, ये हमने देखा हुआ है सर। और प्रोडक्ट्स हमारे इतने क्वालिटी ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो डर हमेशा बसा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट चेतन जी के हाथों में जाने वाला है। वो कल सुबह उठ के साबुन से नहाएंगे और उनको अगर कहीं पर इचिंग हुआ तो परसों ही मुझे 4 गालियां मिलेगी, और चेतन जी के जो 10 दोस्त हैं वो 10 दोस्त वो साबुन को नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है सर, इट गोज 1 to 1, माउथ टू माउथ। वो सलमान खान के पिक्चर वाला सीन है सर, एक जन 3 जन को बोलेगा, 3 जन और 3 जन को बोलेगा, ये ऐसा सिस्टम है सर। माउथ पब्लिसिटी से प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट बगैर क्वालिटी के बिकेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आई स्टैंड नो। Carbon emission policy, we stand number 1 in the entire globe. We fall in the orange industry. We are not red industry. We are not black industry. We are orange industry, and we create more environment healthy systems by doing plantation, by making greenery. And my response is that people should be invited to the facility. मैं शुरू करता हूँ sir. I invite, if my Blue Light people are listening or anybody else is listening, whomsoever wants to come, please you can catch up me. I will take you to the factory and show how things are happening. Take care. That's great, sir. It's a completely different, I would say, viewpoint when it comes to technology transfer. And Dr. Raghuveer की बातों से तो if I can summarize him, I can say that direct selling manufacturing are in fact then carbon negative, जो एक technical term है, that we are contributing more to the environment than what we are taking it. So Madhavan ji, do you agree with Dr. Raghuveer that technology transfer should not be it should not mean that technology is coming to India, but rather it should mean that technology is going outside from India? What are your thoughts on it? And of course, the measures that Amway India is taking to protect the environment. कंपनी में 10-15 लोग का नौकरी चला जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक साथ 10-15 लोग बैठे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? Am I audible? You are audible, sir. You are audible. Yeah. Okay, so as we are a global company, some of the formulations are like, we do make formulations in India, but there are certain formulations which the global team does, and technology transfer is one of the key step in the process where we can bring in some of the best formulas from the globe. So for that, technology transfer is important, and also what happens is this kind of cut down the time to market which takes for these formulas to reach consumers in different markets. That because Amway is a global company, there are more than 120-30 countries which they operate in. So technology transfer is a key process. And also, like one of the key things when you said how it can improve the Make in India initiative is like when companies, when they want to go global, they need to have standard manufacturing equipments and process, which kind of makes the technology transfer easy. I'll stop here as the time has crossed. And on the environmental impact, I just want to add on few things to which Dr. Raghuveer said. Like, yes, Amway facility is a zero discharge facility. Like what he mentioned about Sarvotam, we don't discharge any wastewater from the plant at all. In any wastewater, process water, sewage water, everything is treated within the plant, and only good water is used for gardening. And we are also LEED Gold certified plant, one of the first factories to have LEED Gold certification. And one more thing which we are very proud about is like 70% of the energy what we use, that is electricity energy what we use, is from renewable sources. Around 17% is from in-house solar panels what we have installed on our roof, and around 53% is from we procure energy from wind energy sources. So almost 70% of our electricity energy is from renewable energy sources. That's all from my side. Thank you so much, Mr. Vadhavan. And yes, it's commendable to note that 70% of the energy requirement is being met through sources that are generating through renewable, energy. Moving on quickly, Savnanji, technology transfer and the steps taken by DXN to protect the environment. Yes, Mr. Chetan. Like, yes, on the technology, what DXN is using now has been refined, and technology unit which is implemented in Malaysia is one of the developed and improvised for the past 25 years there. Now, lucky we enough to get the entire technology to transfer to in India, so that India can
have that tested, verified, and successful technology to improve in our factories. That is the Indian factories. This will definitely help the manufacturing sector as a whole and DXN in particular, so that it will help not only make in India, it is a build in India. So our company is focusing on globalization. So we don't hesitate to transfer the technology, the entire technology, which will benefit not only the company and also consumers, also society, and also the industries. This is about the technology. Like with reference to the like environment, yes, all the manufacturing technology, what DXN is employed will protect and save the environment as whole. We are not stopping only that save the environment. We are also going to step ahead to improve the environment through agro-based products. And also this agro-based product, we are not conforming with the agro-based product within India, within DXN. We are outsourcing agro-based product to help the society as a whole with nearby farmers. We are outsourcing the raw material and we will be taking from them. So not only environment going to thrive because of these industries, also the economic of the nearby society going to thrive because of these initiatives. Thus, definitely it will going to be the save the environment has taken all necessary steps to protect. So the environment also protect the benefits of the farmers nearby our area. This is my my concerns. Verdicts. Thank you, sir. Thank you so much for those wonderful comments. And I'm sure no other person than Rajiv Bansalji to conclude this session. Sir, your thoughts on this? Sir, you're on mute. You have to unmute yourself. थैंक यू चेतन जी, थैंक यू वेरी मच. मैं डॉक्टर रघुवीर से 100% एग्री करता हूं. देखिए, टेक्नोलॉजी जो एक ट्रांसफर की जहां तक बात है, इंडिया मोर देन कैपेबल. इंडिया में बहुत कैपेसिटी है. आज वर्ल्ड वाइड भी देखिए तो जो वहां भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रही है तो इंडियन ही कर रहे हैं. मैक्सिमम तो इंडियन ही है वो लोग. तो हम लोग इंडिया में बैठ करके टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते? ऑल्दो हम लोग आयुर्वेदा में हैं और अभी आप यकीन करिए आईएमसी ने बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप की हैं जो आयुर्वेदा के लिए बहुत, आज मैं कहूँगा कि मॉडर्न साइंस की तरह से हैं. अभी हम लोगों ने एक डीआरडीओ के साथ में जॉइंट वेंचर करके एक कॉर्डिसेप्स साइनेसिस एक प्रोडक्ट आता है जो बेसिकली एक हमारे एक कहना चाहिए कि एक हमारे जनरली इसको हिंदी में कीड़ा जड़ी बोलते हैं. तो ये बेसिकली हिल्स का प्रोडक्ट होता था, लेकिन इसकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनी, वो डीआरडीओ के साथ आईएमसी ने मिलकर उसको डेवलप करवाया. तो ये बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारी कैपेबिलिटी है. डेफिनेटली हम लोग इसको इंडिया में काफी कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर में. तो बाकी सब चीजें, चूंकि आपके पास टाइम कम है और सब चीजें लगभग सब लोगों ने बोल दी है. एंड हम लोग तो ग्रीन जोन में है, ग्रीन इंडस्ट्री में है, एंड वी आर हैदराबाद बेस्ड. एंड हमारा जो यहाँ सिस्टम है, क्योंकि जैसे ईटीपी सेंट्रलाइज रहता है, उसके बाद भी यहाँ जो एक सेंट्रल सिस्टम एक बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि जीरो जो डिस्चार्ज होता है वो बेसिकली 100% ऑलमोस्ट ड्रिंकेबल वाटर होता है, ऑलमोस्ट ड्रिंकेबल वाटर. तो मैं डॉक्टर रघुवीर से डेफिनेटली 100% एग्री करता हूँ, बाकी सब लोगों से भी. और थैंक यू वेरी मच बिकॉज टाइम कम है. सो नाइस ऑफ यू. आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके. थैंक्स मिस्टर चेतन, आप लोगों ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम लोग कभी भी इस चीज में जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है. हम लोग आपस में एक दूसरे से काफी कुछ लर्न कर पाते हैं, काफी कुछ. तो प्लीज इसको आगे बढ़ाते रहिए. Thank you very much. So nice of you. Thank you so much. And that's all for today's session. To all our viewers, these were the unseen heroes. These are the people responsible for getting those high quality products to you, जिसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस ग्रो करते हैं. So next time, whenever you are getting your checks, मन में आप इन लोगों को जरूर थैंक यू बोलिएगा. Because of their hard work, because of their efforts, you are able to grow your business. एंड कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा. आपके सुझाव, आपके सजेशंस का हमें वेट रहता है. वी विल ट्राई टू ब्रिंग टू यू सेशंस. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं आईडीए से एक सेशन ऑर्गेनाइज करें, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच टू आवर पैनलिस्ट फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे एंड फॉर दिस वंडरफुल सेशन. As much as I wanted this session to continue, but again, like they say, all good things come to an end. So today's session has also come to an end. Thank you so much, and we look forward to having you again as part of some other panel discussion.
So with these comments, we are bringing this session to an end. Thank you, Jane. Thank you. Thank you.